औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतुन व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग फिज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी बेसिक डेफिनेशंस की। और आप लोगों को याद होगा जब आपने 9th क्लास की फ़िज़िक्स शुरू की थी तो उस टाइम ये डेफिनेशन आपको करवाई गई थी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की। तो डेफिनेशन ऑफ साउंड फिज़िक्स क्या थी? द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी एप्लीकेशंस। उनकी क्या एप्लीकेशंस? तो जनाब ये डेफिनेशन आप लोगों ने साउंड फिजिक्स, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसमें पढ़ी थी। द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड साउंड फिजिक्स। सो डेफिनेशन ऑफ साउंड वैसे क्या है? साउंड बताते खुद क्या चीज है। तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लिसनिंग इन अवर ईयर्स इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द साउंड। कि एनर्जी की वो शक्ल जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करे, उसको हम कहते हैं साउंड। या अगर हम लाइट की डेफिनेशन करें तो लाइट की डेफिनेशन ये है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन एनर्जी की वो किस्म जो हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करे, उसको हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। सुन रहे हो? तो क्या दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लिसनिंग इन अवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? आवाज कैसे पैदा होती है? तो आवाज कैसे पैदा होती है? ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और थोड़ी देर पहले मैं आपको यही चीजें दिखा रहा था। The sound from all eyes in the much like the what sound understand us is a type of energy made by vibrations when a particular object vibrates, causing movement in the air particles or molecules which bump into the other air particles close to them that make them vibrate further and bump. The sound is produced by the vibrating bodies. ठीक है। A vibrating body is required for the production of sound. So things necessary to produce the sound waves, आवाज की मौजें पैदा करने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? तो 3 things are necessary to produce sound. Number 1, a vibrating body, जो कि आवाज पैदा करेगी। That is the production of sound will be by the body. या ये कह दें कि a vibrating body produces the sound waves. क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? मटेरियल मीडियम चाहिए, जैसे एयर है, हवा है, ठीक है, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, इनसे आवाज ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी। तीसरा क्या है? रिसीवर। अब आवाज पैदा भी होगी और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी आपको सुनाई कैसे देगी? जब आपके पास कान होगा, सुनने वाला आला होगा, डिटेक्टर होगा जो आवाज की मौजों को डिटेक्ट करे। तो ए रिसीवर दैट इज एयर। द सेंसेशन ऑफ साउंड के लिए आपको रिसीवर चाहिए। तो 3 things आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द साउंड एंड लिसन द साउंड।
ठीक है, एंड टू ट्रांसफर द साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू एन। ये पूरा मैकेनिज्म जो है इसमें तीन चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक वाइब्रेटिंग बॉडी जिसे हम सोर्स कहते हैं, दूसरा मटेरियल मीडियम, सुन रहे हो, जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में अपना किरदार अदा करता है, अपना रोल प्ले करता है, और तीसरा क्या, ये रिसीवर जिसको हम कान कहते हैं, जो कि साउंड को सेंस करता है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है जी? ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर साउंड इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड द ट्यूनिंग फॉर्क। एक ऐसी डिवाइस जिसे हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। और उसकी भी एनिमेशंस आपको मैं थोड़ी देर पहले ये देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, ये उसकी वाइब्रेशन इस तरह की पैदा होंगी। ये एक डिटेक्टर है, ये वाइब्रेट कर 150 हर्ट्ज का हो तो फिर क्या होगा? वेव्स कम बनेंगी पर सेकंड, कम बनी है ना, 300 पे ज्यादा बनी थी। ये वाइब्रेट कर 300 पे देखे ज्यादा बनेगी। अब 600 हर्ट्ज पे बहुत ज्यादा वेव बनेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड भी बढ़ जाएंगे। नौ इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 150 हर्ट्ज के ट्यूनिंग फॉर्क से फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेव्स आवाज मोटी होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड भी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड भी बढ़ गई। अगर ये 10 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा था, 150 वेव थी एक सेकंड में, तो कितनी 300 वेव्स, और ये 600 वेव्स बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं? उसके अलावा जी एको, ठीक है। पिंग पोंग बॉल यू कैन, एक ट्यूनिंग फॉर्क को इस्तेमाल करके, एक पिंग पोंग बॉल जो है इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ द साउंड को। देखिए ये हमारा, और ये वाइब्रेशंस है, इसकी पोंग्स, इसकी उर्दू में 2 शाखा कहते हैं, इसकी शाखें वाइब्रेट करती है, उससे आवाज पैदा होती है और वो आप महसूस कर सकते हो। इन्होंने हमारा साउंड प्रोड्यूस है, और ये इसके करीब लाकर जैसे इसको टच करेंगे तो ये क्या करेगी? वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। ये क्लियर हुआ? अब ये देखिए, बिकॉज दे आर सो फास्ट वी कैन नॉट, सुनिए, यू कैन ओनली सी द वाइब्रेशन इन द स्लो मोशन। स्लो मोशन में देख सकते हो, अदरवाइज हम लोग नहीं देख सकते। अब ये स्लो मोशन में देख रहे, और ये बहुत स्लो करके आपको दिखा रहे हैं कैमरे से। एनी प्रॉब्लम? सो जनाब, ये ट्यूनिंग फॉर्क आपने देख भी लिया और उससे आवाजें कैसे पैदा होती हैं। तो डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर साउंड इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड द ट्यूनिंग फॉर्क। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज। पहले मैंने बताया एक्सपेरिमेंट किया है, स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट द रबर हैमर। ये रबर का हैमर होता है, इसके साथ इसको टकराते हैं, ठीक है। द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट, और एक आवाज पैदा होगी। वी कैन हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर अवर ईयर। हम अपने कान के करीब लाके उसको, उस आवाज को सुन सकते हैं। या अभी आपने पिंग पोंग बॉल के साथ भी देखा कि उसकी वाइब्रेशन महसूस की जा सकती हैं।
साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आप उसको महसूस कैसे कर सकते हैं, तो ये आप देख रहे हैं पिंग पोंग बॉल जो जिसका एक्सपेरिमेंट मैंने भी आपको दिखा भी दिया थोड़ी देर पहले, या उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग को जिसको आपने रबर हैमर के साथ कराया हुआ है, अब पानी के गिलास के अंदर ले जाए तो उधर से छींटे स्प्लैश ऑफ वाटर जो है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉग बाय स्लाइटली टचिंग इट, by slightly touching its prong with a plastic ball suspended by a thread. The ball will start vibrating because of the vibrations of the vibrating tuning fork. We can also feel the vibrations of the tuning fork by dipping the vibrating tuning fork into a glass of water. It will produce the water splashes. वो क्या पैदा करेगा? पानी के छींटे पैदा करेगा because of its vibrations. Okay? किसी को मसला हो या तो पूछो। दूसरा जी, साउंड वेव्स की नेचर क्या होती है? क्या साउंड वेव्स की नेचर क्या है? तो साउंड वेव्स जो है वो अपनी नेचर में कौन सी वेव्स है? बोलिए पक्का? Transmission of vibration. Vibration is the back and forth motions are produced by the vocal cords in the throat. Transmission of vibration. Sound energy travels in the form of sound waves. There are mainly two types of waves: transverse wave and longitudinal waves. Emily is holding one side of the slinky, while Dr. Zook moves the wave end of to the direction of the wave. If the wave longitudinal wave, Emily is holding one side of the sleeve. Sounds. Let's see how this works. अब ये transverse waves हैं. In a solid, the particles are very close together. Sound energy moves as one part through a solid. It takes a little longer to travel through a liquid. Look at the particles of gas. They are spread out, and hence, sound waves travel most slowly through them, between two consecutive compressions or rarefactions. The number of waves passing through a point in a second, all directions. और इसी तरह आवाज है थोड़ी और ज्यादा देर लेते हैं। दो रेयर फ्रैक्शंस या कंप्रेशंस का दरमियानी फासला एक वेवलेंथ कहलाएगा लैम्डा। नो दिस दे विल टॉक अबाउट द इको एंड यहाँ तक किसी को मसला हो तो साउंड वेव्स अपनी नेचर में क्या होती हैं? हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं या कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। The way this speaker creates sound is by moving the front of the speaker, which is called the diaphragm, back and forth rapidly. Scientists often use the word oscillation to refer to the back and forth motion of an object. This speaker is oscillating too fast for the human eye to see, but if I put a piece of paper on the speaker, we see that because the diaphragm is oscillating, it's bumping into this piece of paper and causing it to dance. The oscillation of the diaphragm will also cause the air in front of the diaphragm to move. ठीक है, तो ऑसिलेशंस की वजह से वो पेपर पे करेगा वाइब्रेट करेगा back and forth. But here's the interesting thing: the air in front of the diaphragm doesn't actually travel away from the speaker. The air molecules in front of the speaker just oscillate back and forth. So how can you hear the sound from a speaker if the air next to the speaker doesn't actually make it to your ear? Well, the reason is that the oscillating air in front of the speaker causes the air in front of it to also oscillate. This causes the air in front of that air to start oscillating, which causes the air in front of it to start to oscillate until finally the air that's actually next to your ear and your eardrum start to oscillate back and forth. This oscillating air that's next to your ear is moving, so it has kinetic energy, so it can transfer energy into your eardrum, which you can perceive as sound. So this speaker was able to transport energy through the air without actually having to transport the air itself. This is an important through the air.
और ये पार्टिकल्स आपके कान के पर्दे के साथ जाकर टकराएंगे without actually having to transport the air itself. This is an important enough fact for me to state again. Energy is traveling across the room here. जो वाइब्रेटरी मोशन है पार्टिकल्स की, वो गौर कीजिएगा, ये आगे वाले को धक्का देगा, खुद पीछे वापस आ जाएगा. Air itself is not traveling across the room. Only the disturbance within the air is traveling across the room. If air were being transported across the room, it'd be better characterized not as sound, but as wind. So this is why we call sound a sound wave, because it shares the defining feature of waves, which is being able to transport energy through a medium without having to transport the medium itself. Medium is a fancy word for the material or substance, but sound waves can travel through all kinds of different materials, like water, metal, ट्रांसपोर्ट करती है or एनर्जी, even वो जो human खलल flesh है and वो ये जगह से bone. And the दूसरी जगह fact that मुंतकिल होता है sound can पार्टिकल्स की travel through वाइब्रेशन human की वजह flesh से. and bone explains something you might have always wondered about, अब अगर which ये is medium ना हो, why do our voices तो sound sound so travel ही नहीं कर Different on audio and video recordings. The reason for this is that when we're speaking to someone, liquid से we travel कर actually सकती hear हैं, two gas से travel कर सकती contributions हैं, from solid our से travel voice. कर सकती We हैं. hear the sound wave traveling out of our mouth, through the air, and into our ear. But we also hear the vibration of the sound wave traveling through our flesh and bone, through our skull, and into our eardrum. But on an audio or video recording, the only part that's recorded is the sound that travels through the air. So when you hear your voice played back on an audio recording, you only hear what other people hear when they listen to you. So the bad news is that, yes, what you hear on audio recordings is actually what you sound like to other people. But the good news is that most of your friends probably don't think it sounds weird, since that's the only voice they've ever heard you use. Unless you do actually have a weird ठीक है, तो अब पढ़िए. तो साउंड वेव्स अपनी फितरत में कौन सी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं. प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग कैन बी अंडरस्टूड बाय ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग एज इन द फिगर ए, बी एंड सी. ये ट्यूनिंग फॉग वाइब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन जब ये वाइब्रेशन शुरू कर देगा तो इसकी जो प्रोंग है, जो इसकी एक शाख है, ये क्या करेगी? जो इसके सामने पार्टिकल्स आते हैं उनको कंप्रेस करेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में भी दिखाया. ये पार्टिकल्स आगे वालों को प्रेस करेंगे और फिर पीछे आ जाएंगे. तो यहाँ जहाँ प्रेशर ज्यादा है इनको कंप्रेशन कहते हैं, जहाँ पे प्रेशर क्या कम है, जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर रीजन. ऐसा ही है ना. तो बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉग द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म. बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है डेंसिटी. कहीं पार्टिकल्स करीब नहीं है, कहीं पार्टिकल्स दूर नहीं है. जहाँ पार्टिकल्स करीब होंगे वहां पर डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. हुजूम ज्यादा होगा ना पार्टिकल्स का, तो डेंसिटी ज्यादा होगी. तो बिफोर द वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉग द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म एज शोन इन द फिगर ए. व्हेन द राइट prong of the tuning fork moves from mean position O to the extreme position B. ऐसे ही या नहीं? As shown in the figure number B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules. ये क्या करता है? ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, दबाव डालता है. किस पर? हवा की उन तहों पर जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं. क्लियर है? एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन. और क्या पैदा कर देगा? एक कंप्रेशन पैदा कर देगा. क्या पैदा कर देगा? एक कंप्रेशन पैदा कर देगा. यहां तक किसी को मसला हो. अब ये कंप्रेशन क्या करेगी? आगे वाले मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगी या नहीं? दिस कंप्रेस्ड एयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन. और इस तरह का सिलसिला क्या करेगा? जारी रहेगा. ए मोमेंट लेटर, एक लम्हा बाद, द prong begins to move from B towards A. अब जो prong होगी वो ऐसे किसकी जानिब मूव करेगी? मीन पोजीशन और फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ. ऐसा ही है या नहीं? तो उससे क्या होगा? दिस कंप्रेस्ड ये एयर लेयर जो है वो तो कंप्रेस करेगी नेक्स्ट लेयर को जो कि उसके बाद है. ए मोमेंट लेटर द prong begins to move from B towards A as shown in the figure number C. Now the pressure in the adjacent layer decreases. प्रेशर क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। जैसे इसमें प्रेशर कम होगा, ये दूसरी लेयर में भी क्या करेगी, प्रेशर को कम करेगी। जब इसमें प्रेशर कम होगा तो दूसरी में भी क्या करेगी, प्रेशर को कम करेगी। नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर टू द प्रोंग, जो इसके साथ जुड़ी हुई लेयर थी उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, एंड ए रेयरफैक्शन, ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। दिस रेयरफैक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का सिलसिला जो है वो कानों तक पहुंचता है और कानों से टकराकर वही सिग्नल आपके कान के पर्दे को ट्रांसमिट करता है और कान का पर्दा फिर उसे 3 बोन्स के जरिए से कॉकुलिया में, कॉकुलिया उसको ब्रेन की तरह मुंतकिल करता है। प्रॉब्लम किसी को तो जनाब नेचर ऑफ द साउंड वेव्स पढ़ते पढ़ते आपको ये भी पता चल गया कि साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, तो इसी को हम पढ़ रहे थे। एज द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अब जब ट्यूनिंग फॉर्क आगे पीछे तेजी से मूव करता है तो अब सिर्फ एक कंप्रेशन तो नहीं बनेगी, बहुत सारी कंप्रेशंस बनेंगी और बहुत सारी रेयरफैक्शंस बनेगी। सो द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क सेट्स ए सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, सुन रहे हो, इन द एयर, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, तो वो एक सीरीज बना देता है किसकी, compressions or rarefactions in the air, and in this way sound wave propagate through the air as a series of compressions and rarefactions. Clear हुआ? As the tuning fork moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions is created in the air. In this way sound wave propagates through the air as a series of compressions and rarefactions, that is the compressional or longitudinal waves. ठीक है जी? As in the figure, the direction is ये कंप्रेशंस हैं, सुन रहे हो, ये रेयरफैक्शंस हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। यही है ना, जिस सिम्त में एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं उसी सिम्त में साउंड भी जाती है, ऐसा ही है। दिस शोज द लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, सुन रहे हो। डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव कंप्रेशंस एंड द रेयरफैक्शंस इज द वेवलेंथ। एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक का फासला या एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक का फासला जो है, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्लियर हुआ? तो इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन द एयर। कंप्रेशंस आर प्लेसेस वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग। कंप्रेशंस वो जगह होती हैं जहां पे जो एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत किसके, इर्द गिर्द की दूसरी जगहों के। ठीक है, is slightly higher than the surrounding air pressure due to high density of the air particles, while the rarefactions are the regions that corresponding to low air pressure due to low density of the air particles at that region. तो यहाँ पे density कम है, यहाँ पे density क्या ज़्यादा है। तो regions of high pressure in the sound wave are called the compressions, and the regions of low pressure in the sound waves are called rarefactions. Problem किसी को? अब जनाब दूसरी चीज़ क्या है, आवाज की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली के लिए क्या किसी मीडियम का होना जरूरी है? तो इसके लिए पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट देखें। साउंड पैदा, अब ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये आपने क्या किया, ये ऐसा बेल जा रहा है जिसके अंदर बाहर से हवा दाखिल नहीं हो सकती और इसको नीचे से किसके साथ जुड़ा हुआ, वैक्यूम पंप के साथ। तो वो इसके अंदर से हवा बाहर भी निकाल सकता है और इसमें हवा दाखिल भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, मतलब कंट्रोल सारा आपका ऑपरेटर्स है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से हवा दाखिल कर सकते हैं, मर्जी से हवा बाहर निकाल सकते हैं। एयर टाइट ये जार है, इसके अंदर बाहर से हवा दाखिल खुद ब खुद नहीं हो सकती। Let us slowly remove the air from the bell jar using the vacuum pump. The intensity of sound is decreasing. अब ये बल बज रही है, हैमर टकरा रहा है बल के साथ, आवाज आपको आ रही है, जार में हवा मौजूद है। Oh, now no. अब आप जैसे वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे वो इसके अंदर से हवा को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, आवाज आस्ता होना शुरू हो जाएगी।
अब आपको नजर आ रहा होगा बेल बज रही है, लेकिन आपके कानों तक आवाज नहीं आ रही। उसकी क्या वजह होगी? क्योंकि आवाज को जो यहाँ वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं वो हवा के पार्टिकल्स के जरिए से आपके कानों तक आ रही है। जार की दीवारों से अगर टकराते थे तो आवाज आप तक आती थी। लेकिन अब क्या हो गया? All the air is drawn out of the jar using a vacuum मीडियम pump. नहीं है मीडियम। So what does it prove? This clearly proves that sound requires a medium for its propagation. What has happened? All the air is drawn out of the jar using a vacuum pump. So what does it prove? This clearly proves that sound requires a medium for its propagation. समझ आ गया? इससे क्या प्रूव हुआ कि साउंड को जरूरत है मीडियम की अपनी प्रोपगेशन के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। क्लियर हो गया? यही सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वो आपने देख भी लिया। तो एक्सपेरिमेंट का प्लेस है बेल जार। ये बेल जार है आपका, इसको रखिए कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिकल बेल, ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द वैक्यूम पंप। नीचे वैक्यूम पंप है, ठीक है, यहाँ से ये होल है, ये वैक्यूम पंप इसके अंदर से हवा को खींच भी सकता है और इसमें हवा को डाल भी सकता है। तो प्लेस ए बेल जार कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिकल बेल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ a vacuum pump, ठीक है। Connect the free ends of the wire of the electrical bell with a battery. It will start ringing. ये करना शुरू कर देगी, रिंग करना शुरू कर देगी। और अब आप ऑन करें वैक्यूम पंप को और पंप आउट कर दें एयर फ्रॉम द जार बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग फीबल एट लास्ट। वो क्या हो जाएगी? इट विल वेनिश, वो आखिरकार बंद हो जाएगी। अब दोबारा से आप हवा को अंदर दाखिल करें, allow the air to enter in the bell jar, sound will be again heard. दोबारा आपको आवाज सुनाई देगी। तो इससे क्या साबित हो गया? कंक्लूजन ये है कि we can conclude from this experiment that the presence of air or the any material medium is necessary for the propagation of sound. Problem किसी को? Atmosphere or air. Propagation of sound in the liquids. No sound can be heard on the liquids में even क्या if you आवाज yell at travel the top कर of सकती your है? voice and the another person stands just next to you. This again नो proves that एटमॉस्फेयर, sound चांद पे हवा cannot नहीं है, travel through इसलिए वहां vacuum. पे एक दूसरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। Atmosphere or air. Also, no sound can be heard on them, even if you yell at the top of your voice and the another person stands just next to you. बिल्कुल आपके साथ बंदा खड़ा होगा, उसको आपकी आवाज नहीं आएगी। Can sound अब travel in जो any सूरज है other इसके ऊपर medium besides air? बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारे धमाके, एटम बम फट रहे हैं, हाइड्रोजन बम, लेकिन आपको Let आवाज us नहीं आती। find वजह it क्या out. है? सूरज और You जमीन can के दरमियान में क्या easily hear the bell Vacuum. ringing खला outside the water. अब खलास है आवाज, Hear it in water? लेकिन रोशनी खलास है Take a तो इसलिए आ रही bucket, है। fill it with clean water. Shake this bell inside the water तो to क्या produce हवा के अलावा sound. भी साउंड दूसरे Make मीडियम में sure ट्रेवल that करती the है? bell जवाब क्या does है? not touch the body of the bucket or the tub. Can you hear now? Maybe not. So, place your ear पानी के अंदर ले gently जाएं। on the water surface. और कान लगाए पानी के This करीब तो आवाज सुनाई। Now you देगी। know how whales and dolphins produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. Dolphins can communicate with each other underwater. Even we humans when we are swimming underwater. Can sound travel through solids? अब Let अंडरवाटर us find कम्युनिकेशन out वेव्स this ऐसे also. करती है, Place your ठीक है? ear at the end आवाज of a जी long मारती है, wooden चीख होती है, table. जी जी करती है, तो आवाज एक दूसरे Ask को your सुनाई friend देती to gently scratch the other end of the table. Can you hear the scratching sound made at the other end of the table? Yes, you can. है। सॉलिड से ट्रेवल कर सकती So, है। we find out that sound can travel through even solids like the wood. Can you say that the sound can travel through the thin strings? Let us see this also. ये वाइब्रेशन, यस, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और वापस You नहीं देंगी। must have shipped surely made a toy phone using paper cups or क्या matchboxes रस्सियों से आवाज and आ सकती है? strings. तो एक Haven't you? एक Can you say that the sound can आला है travel through जो बच्चे strings? बनाते हैं, दोनों साइडों पे Let us कप see लगा the के children स्ट्राइकिंग playing कप, this है ना? game. क्या कहते हैं इसको? Hello, this is Agent Y. It's a toy phone Who game. are you? Over.
I am Agent X. What is the mission? Over. We need to find the hidden treasure in the desert. Over. Yes, let's go. Over and out. That was interesting, wasn't it? This children's game does indicate that the sound can travel even through a string. In fact, sound can travel through any solid. Also, sound travels faster in solids than in air. But do you know how sound travels from one place to another? When we throw a stone in water, then waves are produced in water which spread to a larger area. Similarly, sound also vibrates in waves and spreads everywhere. These waves begin at the object which is producing the sound and travel in all the directions. Suppose you tap a table like this and sound is heard. What is happening actually? When vibration is started by some mechanical event, say such as tapping of a table, this causes a vibration on the molecules next to the mechanical event. That is where your hand hits the table while tapping. When these molecules vibrate, they cause the molecules around them to vibrate too. The vibration will spread from molecule to molecule, causing the sound to travel. The vibrations are carried forward from one point to the next until it reaches our ear and we are able to hear. It's produce sound and it is vacuum. But the sound can travel through air. Bye bye kids. Good morning children. एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं. वाइब्रेटिंग बॉडीज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. और साउंड जो है वो मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती. सो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ. और अब आप यहाँ आ जाइए. अब जनाब एक सिरे पे आपने स्टेथोस्कोप लगा दिए, देख रहे, और कानों में लगा लिए. कुछ थोड़ा सा मज़ेदार करके मोर साइंटिफिक वे में इस एक्सपेरिमेंट को आपने स्टेथोस्कोप कानों के साथ लगा लें और उसका जो डायफ्राम है उसको पानी के अंदर डुबो दें और दूसरे सिरे पे आपका बजाएं, बेल बजाएं. तो क्या होगा, बेल आपको सुनाई देगी. तो रिंग द बेल इनसाइड द वाटर नियर द बैंक ऑफ द पाउंड. एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेल सस्पेंड द स्टेथोस्कोप इन वाटर. लटका दीजिए उसे सच दैट दिस डिटेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेल. इस अंदाज में उसका जो डिटेक्टर है वो बेल की तरफ हो. द साउंड ऑफ द बेल कैन बी क्लियरली हेयर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप. सुन रहे हो? तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू द वाटर और लिक्विड्स इजीली. नहीं समझ आया? ज्यादा इजीली मूव करेगी हवा की निस्बत से. अब जी आपने ये देखना कि क्या सॉलिड से आवाज पास हो सकती है. आगे जंगले को मारेंगे. अब ये साउंड वेव आ रही है, इधर उधर से नीचे भी जा रही है, इधर भी आ रही है. क्लियर हुआ? इधर को भी जाएगी, आगे भी आएगी. समझ आ रहा है? तो आपको आवाज सुनाई. अब जैसे ही अगर ये जंगला थोड़ा लंबा हो, क्या हो, थोड़ा लंबा हो, मेरी बात नहीं समझ रहे, और फिर पहाड़ी नंबर को 1-2 किलोमीटर के पता थोड़ा मारता है, तो आपको 2 आवाजें सुनाई देंगी. कितनी आवाजें सुनाई देंगी? जैसे वो थोड़ा मारेगा, कान आपने उस जंगले के साथ लगाना, तो आपको आवाज सुनाई देगी. एक आवाज उसके थोड़ी देर बाद सुनाई देगी. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, किसके दरमियान? नहीं, जंगले से तो आवाज सुनाई देगी. उसने ठोकर मारी, ठा, आवाज आ गई जंगले से. लेकिन एक आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है. 2 साउंड्स क्यों सुनाई देती है? ना, ना, कोई दीवार नहीं है पास ना, कोई इको नहीं, कोई कुछ नहीं. अब बताओ, मैं बताऊं? जब आप चोट मारते हो तो वो लोहा वाइब्रेट करता है और हवा के पार्टिकल्स में भी वाइब्रेशंस फैलती हैं और जंगले में भी फैलती हैं. अब जंगले में क्योंकि पार्टिकल्स करीब करीब है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आवाज तेजी से मूव करती है. मॉलिक्यूल्स करीब थे ना, तो जितने मॉलिक्यूल्स करीब होंगे आवाज उतनी तेजी से मूव करेगी, उतनी तेजी से मूव करेगी. तो पार्टिकल्स करीब करीब तो फौरन वाइब्रेशन मुंतकिल हो जाएगी. नहीं समझ आ रहा? तो
तो जो पहली आवाज सुनाई दी है वो जंगले से सुनाई दी है, क्योंकि सॉलिड में साउंड ज्यादा तेजी से ट्रैवल करते हैं बनिस्बत किसके, गैसेस के, दूर दूर है। तो अब जो दूसरी आवाज सुनाई दे रही है वो किससे सुनाई दे रही है, हवा से, बिकॉज़ साउंड ट्रैवल्स स्लोली इन गैसेस देन द सॉलिड्स। और लिक्विड्स क्या, उनकी डेंसिटी With the particles being so close together, sound travels quickest through a solid. If we look at particles in a liquid, they appear to be slightly further apart when compared to solid. Thus, sound energy takes ये पार्टिकल्स करीब करीब है तो आवाज सुनाई देगी। It's a little longer to travel through a liquid. Look at the particles of gas. They are spread out, and hence sound waves travel most slowly through them. Now, अब इनकी डेंसिटी क्या कम है, दूर दूर है एक दूसरे से, तो आवाज ज्यादा देर लेगी इनमें मूव करने के लिए ना। गैसेस, ओके, नहीं समझे, बात समझ आ रही है? सो आ जाइए फिर। तो एक्सपेरिमेंट क्या है जी, स्ट्राइक 1.5 ए लॉन्ग रेलिंग विद ए हैमर। एक बहुत लंबे जंगले के एक सिरे को आप थोड़े हथौड़े के साथ चोट मारिए, ठीक है, क्लियर हुआ? योर फ्रेंड स्टैंडिंग नियर द अदर एंड ऑफ द रेलिंग कैन हियर द साउंड ऑन ब्रिंगिंग हिज ईयर नियर द रेलिंग। वो आवाज सुन सकता है अगर अपना वो कान रेलिंग के करीब ले आए तो उसको आवाज सुनाई देगी, क्लियर हुआ? और उसको दो आवाजें सुनाई देंगी, एक कौन सी, ये मैंने ये आपको यहाँ पे ये बताया कि सॉलिड्स जो है उनमें पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, सॉलिड्स की निस्बत उनकी डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले में कम होती है। तो यहाँ आवाज की वेव्स ज्यादा तेजी से कम वक्त में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाती हैं, और यहाँ पे थोड़ा देर लगती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा देर लगती है बनिस्बत सॉलिड्स और लिक्विड के। क्लियर हो गया?